Good morning, dear children. Welcome to you in today's lecture of English. Dear student, in today's lecture, we are going to start the next one lesson of English course book, and the name of it Point, Focus, and Shoot. So, with the heading of the lesson, as you can recognize or just identify that the lesson is based on the photography. So, the point, then focus, and then shoot. So these are the terms which relates to the फोटोग्राफी ये जो टर्म्स है वो फोटोग्राफी से रिलेटेड है. वेन एवर वी हैव टू जस्ट क्लिक अ फोटो, है ना, जब भी हमें कोई फ़ोटो क्लिक करनी होती है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉइंट करते हैं, देन उस पर फोकस करते हैं, एंड देन उसे शूट करते हैं. सो स्टूडेंट, एज द टेक्स्ट इज़ नॉट बीइंग प्रोवाइडेड इन योर कोर्स बुक, सो हियर with this PPT that I am going to just explain you some information about the photography. So student, let's get started. The word photography comes from two ancient Greek words, photo for light and graph for drawing. Drawing with light is a way of describing photography. When a photograph is made, light or some other form of radiant energy, such as X-rays, is used to record a picture of an object or scene on a light-sensitive surface. Early photographs were called sun pictures because sunlight itself was used to create the image. So here let me introduce about the photography, that what is exactly photography. The word photography comes from two ancient Greek words. अब photography जो word है two ancient Greek words से लिया गया है, and that is photo for light and graph for drawing. So drawing with a light means take a picture with light, है ना, कोई भी picture लेना light के through. So here we could say, so it is the description about the photography, that to take a pic with the light. When a photograph is made, light or some other form of radiant energy, when a photograph is made, light of or some other form of radiant energy such as X-rays is used to record the picture of an object or a scene on a light sensitive surface. So when a photograph is made, जब photograph कोई बनता है, so light or some other form of radiant energy, so कुछ radiant energy like such an X-ray, these are related, or these are this is very important while we take any photo. Early photographs were called sun pictures. Early photograph पहले के टाइम में जब फोटोग्राफ्स ली जाती थी, सो अर्ली फोटोग्राफ्स वर कॉल्ड सन पिक्चर्स. उन्हें सन पिक्चर्स भी कहा जाता था बिकॉज सनलाइट इटसेल्फ वॉज यूज टू क्रिएट द इमेज. बिकॉज सनलाइट इटसेल्फ वॉज यूज, सनलाइट का यूज़ किया जाता था फॉर क्लिकिंग एनी फोटो. Now, humans have been creating images at least since the cave painting of some 20,000 years ago. With the invention of photography, a realistic image that would have taken a skilled artist hours or even days to draw could be recorded in exact detail within a fraction of a second. Today, photography has become a powerful means of communication and a mode of visual expression that touches human life in many ways. For example, photography has become popular as a means of crystallizing memories. So, humans have been creating images at least since the cave paintings of some 20,000 years ago. So, just to क्रिएट एनी पिक्चर्स, है ना, किसी भी पिक्चर्स को बनाना, ये कोई इट्स नॉट एन एनी न्यू इन्वेंशन वी कुड से, है ना, ये कोई न्यू इन्वेंशन नहीं है किसी भी इमेजेस की फ़ोटो क्लिक करना. सो इट हैव बीन स्टार्टेड फ्रॉम दिस सिंस मेनी ईयर्स अगो विद द इन्वेंशन ऑफ फोटोग्राफी, एंड नाउ विद द न्यू इन्वेंशन ऑफ फोटोग्राफी के अभी जो न्यू इन्वेंशन है, इट्स अ रियलिस्टिक इमेज दैट वुड हैव टेकन अ स्किल्ड आर्टिस्ट. सो बाय द फेमस आर्टिस्ट, है ना, किसी भी फेमस आर्टिस्ट, और या जो उसमें एकदम स्किल्ड है, स्किल्ड प्रोफेशनल, सो दे कैन क्लिक
दे कैन क्लिक अ रियलिस्टिक इमेज, और वो ऐसी इमेज मतलब रियलिस्टिक इमेज करते हैं। इट मीन्स जो एक्चुअली हमें किसी भी फ़ोटो की अगर इमेज लेनी है, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें इमेज लेनी है, सो इट्स जस्ट लुक्स लाइक अ रियल इमेज। तो वो जो फ़ोटो होती है वो एक रियल फ़ोटो, रियल इमेज दिखाई देती है। देन a realistic image that would have taken a skilled artist hours or even days to draw could be recorded in exact detail within a fraction of a second. So in a very fraction of a second, बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही few seconds में हम फोटो क्लिक कर लेते हैं। Today photography has become a powerful means of communication. Now in today's life we could say that photography has become a powerful means of communication and a mode of visual expression, that if we do not able to see any pictures, है ना, अगर हम कोई अच्छी अच्छी जगहों पर विज़िट नहीं कर सकते, and sometimes supposed to be it's not possible to us to visit any famous places, so we could see the realistic images, है ना, हम उसी सीन को फोटोग्राफी के थ्रू देख सकते हैं। सो visual expression that touches human life in many ways. For example, photography has become popular as means of crystallizing memories. So by looking the photography, various kinds of photography, we can just memorize the actual place, हम उस actual place को देख सकते हैं। Now let me talk about the camera and its part. Every camera reduced to its most basic components is simply a lightproof box with an opening at one end where light can be admitted, and a device of the body and the operating features, however, vary with different types of cameras. So here let me talk about the camera and its parts. Every camera reduced to its most basic component, जनरली क्या होता है, जितने भी न्यू एडवांस कैमरा या जो ट्रेडिशनल कैमराज होते हैं, सिंपली लेट वी से दैट जो उनके जो कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। इस सिंपली लाइट प्रूफ बॉक्स उसका कैमरा इफ़ यू जस्ट रिमेंबर द image of the camera, so it's a light proof box, वो एक light proof box होता है with an opening at one end where light can be admitted, जिसमें लाइट इजीली अंदर जा सकती है, एंड अ डिवाइस एट अदर एंड टू होल्ड अ फिल्म। सो सभी ने कैमराज देखे हैं, ट्रेडिशनल कैमरा वेदर और एनी डिजिटल कैमरा। तो कैमराज से सभी लोग फैमिलियर है, नो वन कैन बी सेड कि हमने कभी कैमरा देखा नहीं है। सो द जनरली वी कुड से द फीचर्स ऑफ दैट कैमरा आर बेसिक फीचर्स, वो सेम होते हैं, बट जो एडवांस आजकल के जो एडवांस कैमराज आए उसमें extraordinary features होते हैं। So let we are going to discuss. And a device on other hand hold film, the shape of body and the operating features however vary with different types of cameras. The shape of the body and the operating features however vary with different types of camera. But when we talk about the different types of camera, जब अलग अलग types के जो कैमरा होते हैं उसके जो फीचर्स होते हैं और जो बॉडी शेप होता है, इट्स वी कुड फाइंड द वैरी इन दैट कैमराज। तो उसमें हम अलग अलग फीचर्स देख सकते हैं। एक्सेप्ट फॉर पिन होल कैमराज, ऑल मॉडर्न कैमराज हैव अ लेंस माउंटेड ओवर द लाइट एडमिटिंग होल, मेकिंग इट पॉसिबल टू टेक अ शार्पर पिक्चर विथ लेस लाइट। A mechanical device called a shutter control the amount of time that light is admitted into the camera. Some shutters are spring operated, others are electronically regulated. The shutter release is a push button or a lever that activates the shutter. Now except for pinhole camera, have you seen the pinhole camera? Pinhole camera में lens नहीं होते हैं, okay? So the cameras having lens, digital cameras में lens होते हैं, but when we talk about the pinhole cameras में लेंस नहीं होते। एक छोटा सा उसमें होल होता है जिसके थ्रू लाइट उसके अंदर एंटर होती है। ऑल मॉडर्न कैमराज हैव अ लेंस माउंटेड ओवर द लाइट एडमिटिंग होल, मेकिंग इट इज़ पॉसिबल टू टेक शार्पर पिक्चर। एंड when we talk about the all modern cameras, और modern cameras में जनरली अच्छे फीचर्स होते हैं एंड वी कैन सी द क्लियरिटीज़, हम उसमें ज़्यादा क्लियरिटीज़ देख सकते हैं।
and making it possible to take sharper picture with less light, or it is one of the very important feature of a digital camera, and that is कि अगर हम less light में, अगर light भी वहाँ पे कम हो, है ना, अगर वहाँ पे मतलब कम लाइट में भी हम एक ब्राइट पिक्चर ले सकते हैं. सो इट इज़ द one of the most important feature of the digital camera. Then a mechanical device called a shutter. A mechanical device called a shutter. Shutter एक shutter button होती है उसमें, which controls the amount of time that light is admitted into the camera. So now here the work of the shutter button is given, and that is shutter button control the amount of time. Shutter button क्या करती है, उस time control the amount of time that light is admitted into the camera. So we could say it control वो कैमरा. It is also one of the important feature of the digital camera, and that is shutter button. It is very important. वो क्या करती है, इस अमाउंट को जब लाइट उसमें एंटर करती है तो उसके साथ बहुत ही कम टाइमिंग में वो पिक्चर ले लेती है. सम शटर्स आर स्प्रिंग ऑपरेटेड, अदर आर इलेक्ट्रॉनिकली रेगुलेटेड, एंड सम शटर्स आर स्प्रिंग ऑपरेटेड. कुछ शटर्स जो होते हैं वो स्प्रिंग ऑपरेटेड होते हैं, एंड अदर्स आर electronically regulated. The shutter release is a push button or lever that activates the shutter. Now let me talk about the camera lenses. The purpose of the camera lens is to transmit rays of light into the camera and focus them to a form of a sharp image on the film. The purpose of a camera. Now the purpose of a camera lens का क्या purpose होता है, is to transmit rays of light into the camera. So with that lens the rays of the light it can be enter into the camera, है ना. तो उसी के थ्रू जो लाइट होती है वो अंदर जाती है, कैमरा के अंदर जाती है, तो फोकस देम टू फॉर्म अ शार्प इमेज ऑन द फिल्म, और उसी की वजह से क्या होता है, एक शार्प और एक क्लियर इमेज हमें मिलती है. विद द सिंपलेस्ट कैमराज नो मैनुअल फोकसिंग एडजस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड. अगर हम सिंपल कैमरा की बात करें तो उसमें कोई ऐसा एडजस्टमेंट वाला कोई फीचर नहीं होता है जिसके थ्रू हमें एक अच्छी क्लैरिटी वाली फ़ोटो मिल सके. ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉर्म अ फ्यू फीट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा टू अ ग्रेट डिस्टेंस अवे विल बी रिकॉर्डेड इन अ रीजनेबली शार्प इमेज. मोर एडवांस कैमराज हाउएवर हैव अ फोकसिंग कंट्रोल दैट एडजस्ट द लेंस so that object at a selected distance from the camera will be focused on the film. And so here when we talk about the traditional camera and the digital camera, so we could see that we can get the clear images or clear picture, है ना, by the digital camera. Photographers can expand or flatten perspective by the use of certain lenses. They can freeze motion or record it is as blur depending on their choice of shutter speed. Photographers can expand or flatten perspective by the use of certain lenses. They use various kinds of lenses to click a photo. They can freeze motion or record it as a blur depending on their choice of a shutter speed. So we have to just choose a shutter speed before clicking any photo. So जितनी जो भी हम उसमें शटर की जो स्पीड डिसाइड करते हैं, ये चॉइस करते करते हैं, सो विल डिपेंड ऑन इट वी कैन गेट द ब्लर इमेज ऑफ दैट फोटो और क्लियर इमेज ऑफ दैट फोटो. दे कैन क्रिएट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइटिंग इफेक्ट विथ फ्लैशेस और फ्लड लाइट. दे कैन ऑल्टर द टोनल वैल्यूज और कलर्स इन अ पिक्चर्स बाय देयर चॉइस ऑफ अ फिल्म एंड फिल्टर्स. So the photographers they can colors in a pictures by their choice of a film and filters. These are only a few of the controls available to a photographer when taking a picture. So before taking any picture of any photographer, they must be ensure they must have to just choose the shutter speed को choose करना it's very important to clicking any photo before clicking any photo. Later in the dark room many additional choices are available. Now student, now let me talk about the difference between traditional and digital camera.
Digital cameras uses lenses and shutter to capture light inside the body of the camera, just like traditional film cameras, but that is where the similarity ends. So let we see the difference between digital camera and the traditional camera. Digital cameras use lenses. Digital camera में lens का use किया जाता है and as well as shutter also to capture light inside the body of the camera, to capture light the body of the camera, just like the traditional film cameras और same traditional cameras में भी होता था, but the film it is used in the traditional camera. फिल्म का यूज़ किया जाता था ट्रेडिशनल कैमरा, वेदर वी कुड सी देयर इज़ नो यूज़ ऑफ एनी फिल्म इन द डिजिटल कैमरा. Instead of using film to capture an image as the traditional cameras do, the digital camera captures the image using an image sensor. तो जो फिल्म का यूज़ है वो कहाँ होता था, ट्रेडिशनल कैमरा पहले के जो ओल्ड कैमराज होते थे उसमें होता था, बट नाउ इट इज़ डिजिटल कैमराज देयर इज़ नो हैविंग एनी फिल्म, उसमें किसी फिल्म का यूज़ नहीं होता. इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट फिल्म द इमेज सेंसर का यूज़ होता है डिजिटल कैमराज में. दीज सेंसर आर कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक इन देयर ऑपरेशन एंड दीज सेंसर आर कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक, वो पूरे तरह से इलेक्ट्रॉनिक होते हैं फॉर द ऑपरेशन. दे हैव वेरियस इंटरनल electronic devices to measure light intensity and a host of other duties. They have various internal electronic devices to measure light intensity and host of other duties. So it is the main difference of digital camera and ट्रेडिशनल कैमरा. सिंपली हम क्या याद रख सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल कैमरा मतलब जो ओल्ड कैमराज हुआ करते थे हम उन्हें ट्रेडिशनल कैमरा कहेंगे, और आज के जो कैमराज है लाइक डिजिटल कैमराज उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिनके थ्रू हमें एक अच्छी क्वालिटी का पिक्चराइजेशन या अच्छी क्वालिटी के फ़ोटोज़ मिलते हैं. सो स्टूडेंट, इट इज़ ऑल अबाउट दी फोटोग्राफी दैट वी हैव सीन इन टुडेज लेक्चर. आई होप you have understood it, the difference between digital camera and the traditional camera. So on the basis of it you can see some exercise is there which is given in the lesson. So we will discuss on the next lecture. Till then, take care and bye bye.